Dear students, in today's lecture we are going to discuss some problems based on the combination of resistors. जैसे कि आप सबको पता है कि हमने derive की है formula for the equivalent resistance in case of the series combination. Here is the question on the base of series combination. We have discussed the formula, we have derived the formula to determine the resistance in case equivalent resistance in case of the parallel combination, and here is the formula, here is the parallel circuit. एंड उसके बावजूद हमने मैंने दो सर्किट यहाँ पे बनाए हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स है, दैट मीन्स सीरीज एज वेल एज पैरेलल कॉम्बिनेशन इज देयर एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई हाउ टू सॉल्व. इनमें से सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन आइडेंटिफाई करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, 10th लेवल के क्वेश्चन है. 10th में इससे भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज वी हैव सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टर्स. हमने डिस्कस किया है, मैं फिर से कुछ नहीं बोलूंगा. The resistor R1 equal to 1.2 ohm, resistance of R2 equal to 1.2 ohm, resistance of R3 equal to 1.2 ohm. मैंने बताया था, यहाँ पे भी मैंने लिखा है कि अगर आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन है, so the equivalent resistance will be the sum of the individual resistances, that is R1 plus R2 plus R3. तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा, so it will be RS मतलब equivalent resistance in case of the series combination will be R1 plus R2 plus R3. लेकिन मैंने एक और बात भी बताई थी कि अगर यहाँ पे ऐसा केस है कि R1 equal to R2 equal to R3 equal to Rn, we don't know how many resistors you can have in a circuit. यहाँ पे मैंने 3 लिए हैं, तीनों एक दूसरे के बराबर है, सो यहाँ पे ये फार्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है. हालांकि बहुत सिंपल है, आप कर सकते हैं 1/2 plus 1/2 plus 1/2, बट यहाँ पे जहां जैसे मैंने लिखा है 1/2 1/2 1/2, तो यहाँ पे फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने डिराइव की थी फार्मूला दैट इन केस ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS is equal to n times R1. Okay, so n times n matlab number of resistors. How many resistors are there in the circuit? There are 3 resistors, so 3 multiplied by the resistance of first resistor, that is 1/2, so it will be 3/2, which is equal to 1.5 ohm. So in this circuit, first we have equivalent resistance equal to n times R1, that is 3 into 1/2, which is equal to 3/2, which is equal to 1.5 ohm. So in case of this circuit, the equivalent resistance, that means the sum of these 3 resistances. Using यह circuit में total resistance है सशिकात बराबर 3/2 ohm, that is 1.5 ohm. So this whole circuit's resistance is equal to 1.5 ohm. So this is the question first, very basic question. ऐसे question तो एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, 10th में भी नहीं पूछे जाएंगे. So second question here, A, B, we have parallel combination. Okay, basic मैं समझा रहा हूँ फिर से. In case of the parallel combination, you have again 3 resistors R1, R2, R3, and you are going to measure the equivalent resistance. You have to check in between the A and B, in between these two nodes, in between A and B, what is the total resistance. Equivalent resistance क्या है? So first identify the circuit. There is parallel combination of the resistors. Okay, so in case of the parallel combination of resistors, we know that the equivalent resistance, the reciprocal of the equivalent resistance is equal to the sum of the reciprocals of individual resistances. So here is the formula Rp, that is Rp is simply equivalent resistance. P represents P and the subscript represents the parallel combination. That means equivalent resistance in case of the parallel combination is 1/R1 plus 1/R2 and 1/R3, so on. So here we have 3 resistors, so definitely we can go like this, 1/Rp. That means reciprocal of the equivalent resistance is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3. ये सर्किट छुस बड़े डिफाइन करा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्कस कोरमुत. पैरेलल कॉम्बिनेशन छ लास्ट फार्मूला कि ये डिराइव गसन सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स यूज आसन छु सु छ रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. सो हियर 1/Rp is equal to, definitely it will be 2 is the resistance, R1 equal to 2, R1 2 is बराबर, but we have to use here 1/R1, so it will be 1/2 plus 1/2 plus 1/2. You can again use 3 times 1/2. Okay, one shinitis two tamas 1/Rp equal to, here we have the same denominator, it is written as 2, 1 plus 1 plus 1, it is 3, again it is 3/2. So Rp, when more reciprocal, Rp equivalent resistance in case of the parallel combination check, so there will be Rp, it is equal to 2/3. Tisha, so Rp will be here 2/3.
3. So this is the equivalent resistance of this circuit. If first is the series combination simple circuit, you have to add the resistances simply. In case of this, you have to add the reciprocals of the resistances, and the sum of the reciprocals will be the reciprocal of the equivalent resistance, and take the final reciprocals, you will get the equivalent resistance. Okay, so these are the first two questions. The third question here we have. Third question now. Third question is this. Okay, कोशिश कीजिएगा कि आपको समझ आए थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में क्या है? थर्ड क्वेश्चन में पहला रजिस्टर ये है, लेफ्ट से ही आएंगे. फर्स्ट रजिस्टर, इट इज सेकंड रजिस्टर, इट इज थर्ड, इट इज फोर्थ. ओके, सिंपल सिटी में उशुन में आइडेंटिफाई करें यम ज कथ मन यम ज कथ मन डायरेक्टली फार्मूला यूज करें कि तो हेकियो न ये R1 plus R2 plus R3 R4 क्या सो सीरीज कॉम्बिनेशन, बट these two are in parallel combination. तो हेकियो parallel combination directly करित किया because we have 1 ohm in between the two parallel resistors, and that it is बने यमन दोन दरमियान series combination, so you cannot use directly the parallel combination of resistors. So what you have to do, first solve these two resistances. Okay, you have to find the equivalent resistance of these two. Yem saat me yeman don hans equivalent resistance nere sakaran bapat yath equate, and I will find the equivalent resistance of this portion. After calculating the equivalent resistance of this portion, I will check what is the equivalent resistance. After equating that resistance with this resistor, we will find the total equivalent resistance of the circuit. So here sir yem zishna यमन यमन दोन रेजिस्टरन, if this is R1, if this is R2, यमन दोन रेजिस्टरन छु पानवे ये के अकोय कनेक्शन छु यमन सो छु ये. सो यम सातन में वनाव यम छु सिंपली ये इथ पठन, it is 1 ohm पात छु ये के इथ पठन, it is again 1 ohm. ये शन पैरेलल कॉम्बिनेशन के सीरीज कॉम्बिनेशन, ये हकन सिंपली योतस खड़ित, it is 1 ohm. So the equivalent resistance here is definitely 2 ohm without any confusion. R1 plus R2, that is 2 ohm. So here the resistance of these two resistors, equivalent resistance, combined resistance of these two resistors is 2 ohm. So सर्किट आप चेंज कीजिएगा टाइम टू टाइम, जैसे ही कुछ सॉल्व हो जाए तो हम सर्किट को थोड़ा कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे. वुशु सा यह 3 ओम कोरने में वही कहीं निशु ऐती, so it is 3 ohm. Okay, यह 2 ohm मस्त कोरने कहीं निशु ऐतनी, so it is 2 ohm here, it is A, it is B. Uttam clear? So here we have 3 ohm, here we have 2 ohm. Ishi ke ye 3 ohm to 2 ohm. Why yem shi series combination mas chana? Yem shi ke series combination mas. Ye 1 ohm, ye 1 ohm. So series combination mas simply equivalent resistance is the sum of resistances. So definitely it will be 1 ohm. It will be 1 ohm. 1 plus 1 is 2 ohm. So we will write it as here. Okay. 1. तो एक ये कैसे बनाए कि ये तेल पैरेलल कॉम्बिनेशन में ठीक है. सो हियर वी हैव 2 ohm, सॉरी 1 ohm plus 1 ohm. मैं कोर ये मन दोन ऐड यह ओत क्वेश्चन छु समझन बाकी गो सॉरी सॉल्व. 1 ohm plus 1 ohm, it is 2 ohm. So सर्किट कोर चेंज, सर्किट बनो ये. ओके, वंश मैं सरसी सर्किटस वुशन रेजिस्टेंस क्या छ मैं कर यम जुकर सॉल्व यम सीरीज में वंश मैं करें कि यम जु सॉल्व डेफिनेटली विदाउट एनी कंफ्यूजन. You should observe directly that these two are in parallel combination. You should and one, you should and one, you should and one, and to end connected. So this is parallel combination. So in case of the parallel combination, equivalent resistance R P is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 and so on. But in case of the two resistors, मैं बोला हूँ तो definitely कि में loop में it is RP equal to it is R1 R2 divided by R1 plus R2. Okay, so how to solve on these two? Simply RP when you say kad barabar hai 2 into 2, that is R1 R2, 2 into 2 divided by 2 plus 2. 2 into 2 is 4, 2 plus 2 is 4, so it is 1 ohm. Okay, so you parallel combination you should confuse gasnu kehin. You can solve this. Yem should resistor parallel combination mas using the formula RP equal to R1 R2 divided by R1 plus R2. मैं कोर यमन formula use and calculated resistance is 1 ohm. So yes, sir yahan chi कि ये portion use आचस resistance that is 1 ohm. Okay, so here circuit करो बे change. We have A here, we have B here. ये 3 ohm ये के मैं कहीं कोरने में योता
येतन 3 ohm इस ये टोटल रेजिस्टेंस छ यम ज रेजिस्टर पैरेललस मस यमन द्राय equivalent resistance 1 ohm, so I will use 1 ohm resistor here. Okay, sorry, I will use 1 ohm resistor here. यहाँ गई सॉल्व ये सावे combined resistor कोता 1 ohm सुई 1 ohm ये तुलम सोरी थोत ये तुल में सोरी थोत अतस त्रावु 1 ohm resistor बाकी शुन कहीं करो सो एक साथ में 1 ohm resistor ये तंत्रो डेफिनेटली यम ज काथ में छ वह इक्वेलेंट रेजिस्टेंस ये पे वोतुस बह गड कर यम जो सॉल्व ये अत द्राव सह कोर ये सॉल्व लास्टस तुल मे यह सोरे थोत अम बदल त्रो मे क्या 1 ohm यह कोर मे कैलकुलेट होता वह मे यम ज रेजिस्टर यम जन यम कथ मज दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन छुना वो सिंपली RS सोरे सॉल्व कर अके साथ क्या RS विल बी डेफिनेटली R1 plus R2 ये R1 3 ohm ये कत बराबर यह 1 so 3 plus 1 is 4 ohm will be the equivalent resistance of this circuit so ये क्या करो ये साथ युथ सर्किट फेस गए अम सत ज रेजिस्टर सॉल्व कर ओके दीज टू आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन सॉल्व दीज टू यम जो तुल थोद लगाव अतन इक्वेलिटी मन दोन क्या यी पत करू तथ यथ सतन पैरेलल कॉम्बिनेशन वुशु यथ सरसी योत तम क्या यी रिप्लेस दिस होल सर्किट बाय दैट इक्वेलेंट रेजिस्टेंस अम पतन गो वुशु यमन दोन क्या यी दैट इज द इक्वेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ दिस सर्किट ओके सॉरी कॉम्बिनेशन ऑफ दिस सर्किट नॉट सीरीज कॉम्बिनेशन सो नाउ next question here is it ज़्यादा मुश्किल कहीं question ये simple 10th level question simple 10th level ये तूता complex यूता 10th किस पता किस आस so here is the circuit okay you should 10 ohm resistor let it be R1 it be R2 it be R3 it be R4 तो वुशु एस निश बथ लगित कुदा 10 योर लगित 6 ये त्रयु तुम फिलहाल सिंपल छुना बनाउन बागर येतस वुशु यम ज सीरीज मज मगर योर पैरेललस मज यम ज सीरीज मज मोन में मगर यथ योर ये रेजिस्टर यथ पैरेललस मज वन दफा बह यम ज मे वुशन बह क्या कर गडने मे येतस 10 ohm ठीक छु येतस 10 ohm ठीक छु मे आइडेंटिफाई कर सीरीज मज कम पैरेललस मज कम योर यह करंट आई यम साथ योतस वाट डेफिनेटली करंट गैस डिवाइड इनटू टू पाथ्स सो हियर यपर गैस I1 यपर गैस I2 येतस आइस बे करंट आई आइस ना सो यम ज सिंपली इन अ सिंगल पाथ मगर येतन छ पाथ डिवाइड गसन सो दीज टू आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन you should directly observe the gasa so these two are in parallel combination so how to solve the parallel combination again you have two resistors in parallel combination one is 12 ohm and second is 12 ohm bishus wanan yem satan zan to youth circuit solve kariu you should simple logic you should ake satan sorry karun kya to ye ges likhu the answer na first check the resistance of this portion okay yem satan me ye portion ges na butul ye portion sudhi karan be replace adan traba ak resistor me ban single path yem sat single path bane me banu simply ak series circuit ak so here we are going to replace this portion by an equivalent resistance using me combined resistance yet portion C so for that purpose me akh resistor is 12 ohm byak 12 ohm chuna so in case of the two resistors and both are in and these two are in parallel combination so if the two resistors are in parallel combination what you have to do you have to use this formula so in this case Rp will be R1 R2 divided by shabash R1 plus R2 now Rp is the equivalent resistance of this portion this R1 let here be 12 ohm R2 is this resistor 12 ohm R1 plus R2 okay so substituting the values of these two resistors in this equation we have 12 multiplied by 12 divided by 12 plus 12 वुशु येतन छु तुदा बड़ मैथ किए इशु सिंपली इक्वेशन इशु डिराइव करमत यम छ ज रेजिस्टर यहां त त्रयु त फिलहाल याला यहां तो करियो युत सर्किट ऑब्जर्व यथ सर्किटस मस क्या छ बासान इशु पैरेलल कॉम्बिनेशन ज रेजिस्टर छ पैरेलल कॉम्बिनेशन मस फॉर टू रेजिस्टर्स वी हैव दिस फार्मूला so substituting the value of these two resistors in this formula what you will get so 12 into 12 is 144 12 plus 12 is 24 so definitely this will be 24 into 1 24 into 6 so definitely Rp will be 6 ohm shuna so Rp yem portion is resistance dar mein kad barabar 6 ohm barabar वही करन बस सर्किट रिप्लेस बे क्या कर ये A
AS should be like 10 ohm resistor. AS should be like 10 ohm resistor. So draw it as is it 10 ohm कोर में draw ठीक है एम पता नहीं ये portion चुना यह portion कर में equivalent resistance मालूम equivalent resistance कुछ आ यह portion मैं उस में 12 ohm resistor काट मस in the parallel combination and I have already obtained the equivalent resistance of these two resistors. Sukat barabar ame so she may yet 6 ohm. So simply using this resistance she as per the calculation is 6 ohm. So replace this whole circuit by 6 ohm. Okay, 6 ohm. And third resistor pannu yeten be kuta 6 ohm. So patchus B. Now you go muscle shown. So show your circuit. You go compress yathmas. So simply now you have series combination, and in case of this combination RS, you should solve karnui. RS shows R1 plus R2 plus R3 in case of the series combination. 10 plus 6 is 16. 16 plus 6 is 22 ohm. So 22 ohm is the equivalent resistance of this circuit. Okay, so these are the 4 basic questions, basic for 10th board exam. And in next lecture we will discuss the more problems on this. I will upload more and more problems on combination of resistors and on the basis of the Joule's law of heating. So